الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراقك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये दुनिया एक मकान है, उसका मकीन इंसान है। सारी कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया और सजाया है इंसान के लिए। जैसे सारी बारात होती है वो बारात दुल्हा के लिए होती है। बारात दुल्हा के लिए, दुल्हा बारात के लिए नहीं होता है, बल्कि दुल्हा के लिए बारात होती है। इसी तरह इंसान दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया इंसान के लिए है। कायनात का जर्रा जर्रा
آسمان، زمین، چاند، ستارے، سیارے، بحر و بر، خشکی، تری، سمندر اور اس کی مخلوق، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات، فضائی مخلوقات، سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. My respected brothers, this entire world is a place for us to stay in. Allah has created it. However, the inhabitants of this world, those that will populate it, is insan. Allah has created the whole world as a place that will be inhabited by human beings. And Allah subhanahu wa ta'ala, in order to fulfill the needs and requirements of this insan, this human being, has placed various things in this world. An example we can understand, sometimes a wedding is about to take place. A lot of decoration, hall is planned, all sorts of things are done. All these things are done for the bride. The bride is not there because of the wedding preparations. The wedding preparations are primarily done for that bride and for that nikah that is to take place. In exactly the same way, understand the earth, the sky, the sun, the rivers, the moon, the mountains, everything. Allah subhanahu wa ta'ala has created it for this human being. This human being has not been created for this world. What is his purpose? Great glad tidings Allah subhanahu wa ta'ala has given. It's important to understand your prominence, your importance, the status, the position that Allah subhanahu wa ta'ala has denoted and granted you. Inna dunya khuliqat lakum. This whole world was created for you. اسی انسان کائنات کی کسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ سورج کی، نہ چاند کی، نہ ستاروں کی، نہ سمندر کی، اس لیے کہ وہ خادم ہے، انسان مخدوم ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان مخدوم ہو کر خادم کی عبادت کرے تو بے عقلی ہے اور ظلم ہے، اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان میں سب سے پہلی نصیحت یہی کی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے پیارے بیٹے، شرک نہ کرنا، یعنی کسی مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ کا ہر غیر مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آدمی خالق کے ساتھ اگر مخلوق کو شریک کرتا ہے عبادت میں، یا اس کی ذات میں یا صفات میں اس کی عبادت میں، تو اس سے بڑا بھاری ظلم کیا ہوگا کہ اس نے مخلوق کو خالق کے برابر قرار دے دیا۔ اس لیے انسان نہ کسی چاند کی پوجا کرے گا، نہ سورج کی کرے گا، نہ سمندر کی، نہ درخت کی، نہ حجر کی، نہ شجر کی، نہ خود انسان اپنی پوجا کرے گا۔ انسان تو پیدا ہوا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صاف بتایا ہے مقصد زندگی، مقصد حیات، کہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ساری چیزیں تمہارے لیے کیوں پیدا کی گئی ہیں۔ وسخر لكم ما في الارض جميعا، کائنات کی ہر چیز، زمین کی، آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہے، یعنی پیدا کر کے ہم نے تمہارے کام میں لگایا ہے۔ کوئی چیز انکار نہیں کرتی۔ آدمی زمین پر گھر بنانے کے لیے زمین کو کھودتا ہے، کنویں کے لیے کھودتا ہے،
گندگی ڈالنے کے لیے زمین کو کھودتا ہے، لیکن زمین اب ابا نہیں کرتی، انکار نہیں کرتی، وہ تابع ہے۔ سمندر کی ہر مخلوق تابع ہے، جنگل کے جتنے بڑے بڑے جانور ہیں، یہ ہاتھی ہے، یہ شیر ہے، یہ اونٹ ہے، سارے انسان کے تابع ہیں۔ کوئی جانور، کوئی مخلوق انکار نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے ہم کو بنایا انہی کے لیے ہے۔ سخرہ کے معنی پیدا کر کے کام میں لگا دینا، مطیع فرمانبردار بنا دینا۔ اسے فرمایا کہ انسان دنیا کی کسی چیز کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، کس لیے پیدا ہوا ہے؟ آگے اسی حدیث کا حصہ ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ اللہ پاک نے تم کو جو پیدا کیا ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی جو زندگی دی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری نگاہ آخرت پر ہو، میری آخرت بنانا اسی دنیا میں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ آقا نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70 وقلیل منہم ما یتجاوز۔ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان میں ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، 80-90-100 سال پہنچتے ہیں، ورنہ 60-70 سال میں آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا عمر تھی؟ اگر کہا جاتا 40-35 کے اندر، لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، کہتے جلدی چلا گیا۔ لیکن اگر کہا جاتا بھی 90 سال عمر تھی تو لوگ تعجب کرتے ہیں، اچھا 90 سال جیتے گئے، اس سے پہلے مرے کیوں نہیں؟ 90 سال 100 سال کی زندگی مل گئی، پہلے مرنا تھا۔ تو حالانکہ آدمی کی زندگی عام طور سے 60-70 سال کے درمیان ہوتی ہے اور آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی جو اللہ نے دی ہے مختصر سی ہے، لیکن بڑی قیمتی زندگی ہے۔ کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ اسی زندگی پر آخرت کے بننے بگڑنے کا دار و مدار ہے۔ یہ زندگی صحیح گزری جیسے مطلوب ہے تو آخرت بن جائے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خدا نخواستہ یہ زندگی غلط گزر گئی، فرمایا کہ آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے وہ بگڑ جائے گی۔ اس میں فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ This world has been created for this human being. This is why a human being will not make the ibadat and worship anything of this world. Not the sun, not the moon, not the stars. Why? Because these are your servants. Allah Ta'ala created this for you. So by worshipping them, it's like a person worshipping that which is in his service. This defies logic. It goes against basic intelligence. This is why shirk, ascribing partners with Allah subhanahu wa ta'ala, this has been referred to as a great form of zulm and oppression. We find in the Quran, amongst the advices that Sayyidina Luqman alayhi salam gave his son, the first of those advices, Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. That, O my beloved son, do not ascribe partners with Allah. For verily, shirk, ascribing partners with Allah subhanahu wa ta'ala, is a very, very great form of zulm and oppression. We find that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of everything that exists. Everything besides Allah subhanahu wa ta'ala is makhluk. It is a created entity. So to ascribe partners with Allah either in His being or in His attributes or in any of His manifestations, this in fact is a very, very great form of injustice and zulm.
Allah subhanahu wa ta'ala has placed this entire world in the service of humanity. The term we use is taskhir, sakhar, subjugated, created and then placed in your service. The sun, the moon, the stars. So it defies logic that you worship any of these things, even yourself. Worship is only for Allah subhanahu wa ta'ala. And this is in fact the objective of our life. Allah says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create insan and jinnat for any other purpose besides the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So far as things in this world, سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Allah has created and placed in your service everything in the heavens and the earth. For example, you want to build a house, you dig a foundation in the ground. You want to plant, you dig the ground. You want to draw water, you dig a well. The ground is at your service, it does not object. It has been placed in your servitude. Likewise, the oceans, likewise the animals of the jungle, even though they may be much larger than you, elephants, lions, none of these things object to the service that is extracted from human beings. Why? Sakhar. Allah has created and subjugated them. Allah has made them muti'a. Allah has compelled them to the obedience of insan. Why was insan and this human being created? Not for this world. This insan and human being was created for the akhirat, for the hereafter. The life of this world was given so that we make our akhirat. Our gaze should not be on the dunya. Our gaze should be on the akhirat. Why? The life of this world is very, very short, very, very insignificant. Our noble master, sallallahu alayhi wa sallam, gave us the formula, the parable. Amaru ummati, ma bayna sittina ila sab'een, wa qalilum ma yatajawaz. That the general average age of my ummah will be between 60 and 70 years. Very few will go beyond that. That is why we hear that. Sometimes somebody passed away, first question by how old was he? Tell you 30 years, 20 years, 40 years. Oh, very short life. Other hand, if you are told a person lived to 90, such a long life Allah subhanahu wa ta'ala gave him. Based on this principle that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave us, life is very, very short and very, very valuable. Valuable in this sense that the eternal, never-ending life of the hereafter is dependent on how this short life of the world is spent. Spent correctly, then akhirat and the hereafter will be made. Spent incorrectly, then the eternal, never-ending life of the hereafter will be destroyed. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में कौन इंसान है जो साहिब अकल है, फरासत है, साहिब समझ है, कि दुनिया कहती है फला आदमी बड़ा समझदार है, बहुत ही अकलमंद इंसान है। कौन है? जो कल तक गरीब था आज मालदार हो गया, कल तक जो है वो छोटे ओहदे पर था आज बड़े ओहदे पर पहुंच गया, कल तक झोपड़ी में रहता था अब महल में पहुंच गया, कल तक वो साइकिल में पैदल चलता था आज कारों में घूम रहा है, कल तक उसके पास पैसे कम थे आज माशाल्लाह अरबपति खरबपति हो गया है। दुनिया इसे कहती है अक्लमंद। लेकिन अल्लाह के नबी सलाम ने क्या फरमाया? अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। समझदार आदमी कौन है? फरमाए कि उसके अंदर जो अल्लाह ने ख्वाहिशात रखी है इम्तिहान के लिए, उन ख्वाहिशात पर न चले, उसको कंट्रोल में रखे, ख्वाहिशात का बंदा न बने। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा का मिसबाक न बने, ख्वाहिशात को कुर्बान करे, ख्वाहिशात पे लगाम लगाए और अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए आखिरत में जो आमाल आदमी के लिए सबब बनते हैं उन आमाल की तैयारी आज करे। वअमिल लिमा बअदल मौत, मरने के बाद की जो ला मुतनाही जिंदगी,
अबदुल आबाद की जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। फरमाया कि उसकी तैयारी आज जो कर ले, जिससे आदमी के बरज़ख बनता है, खबर बनती है, हशर बनता है, उलसलात बिजली की तरह पार हो जाता है, नामे अमाल दाने हाथ में मिलता है, नेकियों का पर्रा झुक जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर मिलता है, आपकी सिफारिश नसीब होती है, आपके झंडे तले जगह मिलती है और बिला हिसाब किताब जन्नत में पहुंच जाता है। वो आमाल की तैयारी आज कर ले। वअमिल लिमा बअदल मौत, मौत के बाद जो लामहदूद जिंदगी आने वाली है, उसकी मंजिलें हैं, उसमें गुजरना है, वहां हिसाब किताब है, अल्लाह के सामने पेशी है, वहां अदालतें कायम होगी, अकीदे की भी होगी, हुकूकुल्लाह की भी होगी, हुकूकुल इबाद की भी अदालत होगी। इन सारी अदालतों में पास होने वाले जो अमाल हैं, पास करने वाले जो अमाल हैं, उसका मौका आज है, मौत से पहले। वो अमाल आज कर ले। फरमाया कि वो इंसान अक्लमंद है, समझदार है। Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam defined intelligence for us. One is the worldly perception. Who is the intelligent person amongst you? The one who was a pauper yesterday and he's a millionaire today. The one who was riding a bicycle today and he's driving a fancy car today. The one who was living in a hut yesterday and he's living in a palace today. The one who was poor yesterday and today is very, very wealthy. This, from the worldly perspective, is how intelligence is defined. However, true intelligence, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. He said the intelligent person amongst you is the one, on the first hand, desires are there because this world is a place of temptation. It's a place of test. The one who will not give in to the dictates of those desires which take him to the disobedience of Allah. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Allah says, will you not see those who have made their passions and their desires their God and are following and worshipping that? No. To suppress those desires. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. And do in this world today what will help you in the eternal life of the hereafter. Do those actions today that will become a source of benefit to you in the grave, in the barzakh, in the stage after this world. Do those actions today that will cause you to cross the Sirat, the bridge over Jahannam, with the speed of lightning. That will give you the water of Kawthar from the hand of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That will cause your book of deeds to come in the right hand. That will cause you to gain the intercession of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That will lead to your entry into Jannah. Do those actions today. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. Why? Because there is reckoning that is going to come in the hereafter. There is a presentation in Allah subhanahu wa ta'ala's court that is going to happen. There is a system and a court and a scale of justice that will be set up. And at that scale of justice, the aqidah and the belief of a human being will be tested. The fulfillment of the rights of Allah, the fulfillment of the rights of the fellow human beings, the preparation for that, the intelligent one amongst you is the one who in this world will prepare for that. कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक हकीकत बयान की है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार जो सांस लेता है छोड़ता है, सबको मरना है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका आज तक किसी इंसान ने इनकार नहीं किया है। लोगों ने अल्लाह का इनकार किया,
ملحد ہو گئے، زندیق ہو گئے، جنت و جہنم کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، یہاں تک کہ بعض وہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم انسان نہیں ہیں، بندر کے اولاد ہیں، آدم کے اولاد نہیں، بندر کے اولاد ہیں۔ ترقی کرتے کرتے آج یہ شکل بنی ہے، گویا کہ اپنے بنی آدم ہونے کا انکار کیا ہے، لیکن کوئی مئی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا جو موت کا انکار کرے۔ اسی لیے قرآن کریم نے 2 جگہ پورے قرآن میں موت کو یقین کا نام دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ حجر میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی سے فرمایا اے نبی جی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے، وفات ہو جائے۔ یقین کے معنی وفات اور موت کے ہیں۔ یقین اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے، یقینی چیز ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یقینی ہے، اجتماع چل رہا ہے، یقینی ہے، یہ ساؤتھ افریقہ ہے، یقینی ہے، جو انکار کرے گا وہ پاگل ہے، تو یقینی چیز۔ دوسری کا فرمایا سورہ مدثر میں قیامت کے دن جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اللہ پاک اہل جنت سے کہیں گے پوچھو ان کو کہ جہنم میں کیوں آئے؟ تو اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، اے ما دخلکم فی نار جہنم؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا نكذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ کیوں آئے جہنم میں؟ 4 باتیں بتائیں گے۔ ہم نمازی نہیں تھے، اور مال تھا، دولت تھی، کھلاتے کسی کو نہیں تھے، مسکینوں کا حصہ نہیں تھا، اور کھیل کود میں لگے رہتے تھے، لہو لعب میں لگے رہتے تھے، اور عملاً آخرت کا انکار تھا۔ گویا کہ اس حال میں زندگی گزر رہی تھی حتیٰ کہ موت آ گئی، حتیٰ اتانا الیقین۔ یہاں بھی یقین کے معنی موت کے ہیں، موت آ گئی۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ موت کو اللہ نے قرآن میں یقین کے نام سے یاد کیا ہے، موت آنی ہے۔ بر فرق اتنا ہے کہ ایمان والے موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں، اس پر ایمان ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جزا سزا ہے، جنت و جہنم ہے۔ اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب مر گئے تو مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، مٹی ہو گئی، اب کیا اٹھنا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون۔ جب مرنے کے بعد اٹھنے کی بات ہوتی ہے کہتے ہو بہت دور کی کوری ہے، بہت دور کی باتیں کرتے ہو، آج تک کتنے ہزاروں لاکھوں انسان مرے، کوئی اٹھا نہیں، تم کہتے اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے۔ تو اور میرے دوستو، موت یقینی ہے، اور موت کے بعد اٹھنا ہے، اور موت کے بعد حساب کتاب ہے۔ وہاں 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ مرنا ہے، حساب کتاب ہوگا، اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا اور اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا، فقد فاز۔ یہ جملہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ کامیابی ہے، جنت میں جانا اصل کامیابی ہے۔ کیوں؟ وہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، وہاں خوشیاں ہیں، غم نہیں ہے، وہاں پر جو زندگی ہے موت نہیں ہے، وہاں پر صحت ہی صحت ہے، بیماریاں نہیں ہیں۔
कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। दुनिया में सुख के साथ दुख के कांटे लगे हुए हैं, जवानी के साथ बुढ़ापे का कांटा है, सेहत के साथ बीमारियां लगी हुई हैं और जिंदगी के साथ मौत लगी हुई है। सब खत्म होने वाला है। इसलिए फरमाया असल कामयाबी जन्नत पे जाना है। इसलिए आका ने फरमाया वह आमिन लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो आदमी अमाल काम देने वाले हैं, जो जन्नत पे पहुंचाने वाले हैं, वो करने वाला इंसान इस दुनिया में अकलमंद है, वरना नादान है, बेवकूफ है, अकल का दुश्मन है। चाहे कोठी में रहता हो, चाहे फिजाओं में उड़ता हो, चाहे अरबपति खरबपति हो, किसी मुल्क का वो यानी मुतलकुल इनान बादशाह हो, वजीर हो, क्यों भी हो, लेकिन आमाल वो नहीं है जो मरने के बाद उसे जन्नत में ले जाने वाले हैं। आका फरमाते हैं वो नादान है, बेवकूफ है, अकल से काम नहीं ले रहा है, वो दुनिया ही को सब कुछ समझ रहा है। जो असल जिंदगी दी गई थी आखिरत बनाने के लिए दुनिया की, ये दुनिया को लहू लइब में गुजार रहा है, मनमानी जिंदगी गुजार रहा है, आखिरत को भूले हुए है, फिक्र आखिरत से गाफिल है। इसलिए मेरे दोस्तों असल मसला यही है। यही बात समझाने के लिए हर जमाने में अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा है। The Quran emphatically declares an undeniable reality, what we call haqiqat, that which cannot be denied. It's an absolute certainty. Kullu nafsin za'iqatul maut. Every soul will taste death. Death, you and I, every one of us will die. This is something that cannot be denied. Throughout the ages, all sorts of absolute realities were denied. People denied the existence of Allah. Atheists, agnostics, likewise Jannah, Jahannam, the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. Human beings even denied their own origin. Bani Adam means the son of man. Some of them said no, we are the son of monkeys. Even that was denied. But no one born on the surface of this earth or who will be born can ever deny death, which in two places in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala refers to as yaqeen, certainty. One in Surah Hijr, Allah's Habib sallallahu alayhi wa sallam is commanded, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, that O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, worship your Rabb until yaqeen comes. In other words, death comes to you. In other words, that which cannot be denied, it's a certainty. Like you and I right now are sitting here, that's an undeniable certainty, reality. Ijtima is taking place. We are in the country called South Africa. If somebody denies any of these things, we'll say he has lost his marbles. He's gone mad. It's a certainty, it's there, it's undeniable. Likewise in Surah Muddathir, we find Allah Ta'ala mentions a conversation. The people of Jannat will ask the people of Jahannam, Ma salakakum fi saqar. In other words, Ma adkhalakum nara Jahannam. What caused you to enter into the fire of Jahannam? They will respond, لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. Four things caused us to enter into Jahannam. We would not perform our salah. We did not spend the wealth which Allah Ta'ala gave us in the way of Allah. We consigned this life to games and amusements. Practically we denied the reality of akhirat, of the hereafter. Hatta, and we persisted in this atana al-yaqeen until yaqeen came to us. This is the second place in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala refers to maut and death as an undeniable reality. What is the difference?
believer, disbeliever, everyone cannot deny death. The difference is the people of Iman have Iman in life after death. Hisab is coming, reckoning is coming. Jannat, Jahannam, this is a reality that lies in front. On the other hand, the people without Iman throughout the ages, hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Get away from here, get away from here. How many thousands and millions have died? No one has ever come back again. So there is no resurrection, etc. So we find, my respected brothers, we learn, Anbiya alayhimus salatu wassalam came with this, that after death there will be resurrection. Allah will bring you back to life, and then reckoning will take place. And in the hereafter, there is only two places, two eventual abodes. There is no third one. It is either Jannat or Jahannam. This is a reality. Kullu nafsin za'iqatul maut. Every one of you will die. There will be hisab and reckoning. فَمَنْ زُحْزِحَ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. This hisab, reckoning will take place. You will be recompensed in full according to your actions. And then our guest says, this is the point I wanted to highlight. The one who is saved from Jahannam and enters into Jannat, faqad faz, he has succeeded. This is success. Jannat, where you will be eternally young, there will be no old age. Eternally happy, no sorrow or grief. Eternal life, no death. Eternal health, no sickness. In this world, health is coupled with discomfort, with worry, with depression. Wealth is coupled with difficulties and hardships, tests and trials and tribulations. The real success is the success of Jannat, is the success of the Akhirat. That is why our Master sallallahu alayhi wa sallam said, in this world, appropriate your actions. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. The intelligent person amongst you is the one who is working for that success, for the eternal success of the Akhirat. Otherwise, he may be wealthy, he may be a king, he may be a politician, he may be a ruler, he may be considered to be an intelligent person amongst you. If his actions are not for the hereafter, then he is a fool. That is not intelligence. A life following one's desires at the expense of Akhirat, of the hereafter, the one who is ghafil, negligent of the life of the hereafter, that is not an intelligent person. Every Nabi of Allah throughout the ages came to make this effort to correct this conviction in the hearts of humanity. इंसान की फितरत है कि वो फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहता है. अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाता है कि उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए. आदमी तिजारत करता है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए. किसान जमीन पर मेहनत करता है अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को बनाने के लिए. हर आदमी के सामने फ्यूचर है. आज जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आज के लिए कम है, कल के लिए कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, मना नहीं है. लेकिन गलत फहमी ये हो जाती है कि फ्यूचर कौन सा है. लोग समझते हैं कि फ्यूचर, बच्चे का फ्यूचर जवानी है, जवान का फ्यूचर बुढ़ापा है. इसके लिए मेहनत हो रही है. लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ईमान वालों से कह रहे हैं, बेईमानों से नहीं. जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानते हैं, नबी को मानते हैं, नबी की मानते हैं, कुरान को मानते हैं, कुरान की मानते हैं, शरीयत को मानते हैं, शरीयत की मानते हैं, मरने के बाद की जिंदगी को मानते हैं. उनसे अल्लाह मुखातिब हैं. पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने 87 जगह, 87 जगह अल्लाह ने हमसे और आपसे खिताब किया है. जो ईमान वाले हैं,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये 87 जगह पूरे कुरान में। लेकिन ईमान वाले को पता नहीं कि अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं, अल्लाह का क्या खिताब है, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह के अवामिर क्या हैं, अल्लाह के नवाही क्या हैं, अल्लाह की मर्जियात क्या हैं, अल्लाह की नामर्जियात क्या हैं, अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं कुरान में। तो एक जगह ये फरमाया सूरह हश्र में 28वें पारे की सूरत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ए मेरे ईमान वाले बंदो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझे मानते हो, मेरी मानते हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। वो जो लोग मानते नहीं मुझे, या मेरी नहीं मानते, मुझे नहीं मानते, मुझे मेरी नहीं मानते, और मेरी बातों पर यकीन नहीं है, उनसे तो बाद में बात करेंगे, जब मुझे मान लेंगे, मेरी मानेंगे। लेकिन आज तुमसे बात करता हूं। क्या बात कर रहा हूं? मेरा ख्याल रखो, मुझसे डरो, यानी मेरी नाफरमानी से डरो, इसलिए कि मैं नाराज होता हूं मेरी नाफरमानी से। और अल्लाह की नाराजगी बहुत खतरनाक बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था, सबसे बड़ी खुशी की चीज क्या है? कि अल्लाह की रजा है। वो रिज़वान मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। सबसे खतरनाक बात क्या है? कहा अल्लाह की नाराजगी। अल्लाह नाराज हो गए, आदमी जहां भी रहेगा परेशान होगा, दुनिया भी परेशानी की गुजरेगी, आखिरत भी परेशानी में आएगी। अल्लाह को नाराज न करना। अल्लाह जो नाराज होते हैं वो अल्लाह की नाफरमानी से नाराज होते हैं। जैसे एक बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा ये करो, बेटा नहीं करता है, बेटा ये ना करो, तो बेटा वो करता है, हुक्म को बजा नहीं लाता, मना करने से रुकता नहीं है। तो कौन बाप है जो बेटे से हर हाल में राजी हो जाए? फरमाया कि अल्लाह नाराज होते हैं अल्लाह की नाफरमानी से। अल्लाह के अवामिर है, बजा नहीं लाया, अल्लाह नाराज हो गए। अल्लाह ने कहा कि ये मुनकरात हैं, ये नवाही है, इससे बचो, लेकिन बच नहीं रहा है, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। अल्लाह कहते या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। आगे फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि तुम में से हर आदमी, वल तंजुर नफ्सुन में माशाअल्लाह उलमा है, हजरत माशाअल्लाह उसका तर्जुमा करके बताएंगे। नफ्सुन में तनवीन बराए तामीम है। हर इंसान, अमीर, गरीब, देहाती, शहरी, बादशाह, फकीर, अरब, अजम, काला, गोरा, अफ्रीकन, एशियन, अमेरिकन, जो जितने इंसान हैं सबसे खिताब ईमान वाले खास तौर से। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, मां भी उमूम के लिए है। मा क़द्दमत लिग़द, उसने कल जो आने वाला दिन है उसके लिए आगे क्या भेजा है, क्या तोशा उसके पास है। गद के माने ये नहीं कि साहब आज जुमा है कल शनीचर है, ये दुनिया का गद है। लेकिन यहां गद से मुराद पूरी दुनिया आज है, जब मौत आएगी गद हो जाएगा, उसके बाद गद नहीं आएगा, टुमारो नहीं आएगा। वो मरने के बाद जो दिन आएगा वो गद है, पूरी जिंदगी, उसके बाद गदन नहीं आने वाला है। अल्लाह कहते मरने के बाद की जो जिंदगी जिसको गदन हम कह रहे हैं, उसके लिए तुम्हारे पास क्या तैयारी है। अल्लाह हमसे पूछ रहे, मां वल तंजुर, मुहासबा करे, जायजा ले, गौर करे, अपने आप पर जोर डाल के सोचे, इतनी जिंदगी मेरी गुजर गई, आइंदा कितनी है बाकी मालूम नहीं है। इसके लिए मैंने दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा गया था उस मकसद में मैं कितना कामयाब और नाकाम हूं। सोचे, गौर करें। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, तुम्हारे हिसाब होने से पहले अपना हिसाब कर लो, वहां पाई पाई का हिसाब होगा।
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى। जर्रा बराबर भी भलाई की है वो भी सामने लाई जाएगी, उसकी जजा मिलेगी। जर्रा बराबर बदी बुराई की है, शर किया है, वो भी सामने लाई जाएगी, दिखाई जाएगी, उसकी सजा मिलेगी। वो सजा जजा का दिन है, वो मालिक यौमिद्दीन है, रोज़े जजा का मालिक है। वहां कोई किसी की नहीं चलेगी। हर आदमी नफ्सी नफ्सी कह रहा होगा, अंबिया भी परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। उस दिन के बारे में सोचो कि तुम्हारे पास क्या तैयारी है। तो मैं कह रहा था मुस्तकबिल की तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन असल मुस्तकबिल क्या है वो मरने के बाद है। वो निगाहों से ओझल है, दिमागों से निकला हुआ है। बच्चों का मुस्तकबिल जवानी है, जवानों का मुस्तकबिल बुढ़ापा है, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन मरने के बाद का जो असल मुस्तकबिल है, कुरान कह रहा है उसकी तैयारी करो। उसी को आका ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। मरने के बाद जो असल मुस्तकबिल है उसकी तैयारी करने वाला ये साहिब अक्ल है। ये 60-70 साल जिंदगी, इसके लिए तो इतनी फिक्र है, खाने की, पीने की, पहनने की, मकान की, सवारी की, शादी की। लेकिन मेरे दोस्तों, कब्र में जो बरज़ख का जमाना कहलाता है, अल्लाह ही जानते कितने हजार बरस रहना है। फिर क़यामत का एक दिन 50,000 साल का दिन है। उसके बाद के जन्नत और जहन्नम के फैसले हैं, और जन्नत में जाने वाला हमेशा जन्नत में रहेगा, और खुदा न खासा बगैर ईमान के जहन्नम में चला गया हमेशा जहन्नम में रहेगा। उसके बारे में आदमी कोई फिक्र नहीं है। उसके पास ना वक्त है, उसके पास ना माल है, न उसके पास फुर्सत है। कहते वहां देखेंगे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। It is in keeping with human nature. It's a natural instinct of human beings to have this concern for the future. Person is educating his children. Why? Planning for the future. Every businessman is earning today for tomorrow. The farmer engages in agriculture. Why? He's planting today to reap the harvest of tomorrow. There are very few that are actually working for the current time. Everyone generally is planning, making effort, utilizing his means at his disposal, earning for the future. There is technically nothing wrong with this. This is part of human nature. The question, the important thing to identify is what is the future. If it's an infant, is his future to become a young man, thereafter enter into adulthood, and thereafter go towards old age? Is that the actual future? Allah subhanahu wa ta'ala addresses the people of Iman in the Quran. When we talk of people of Iman, who are these people? Those who believe in Allah, who believe in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who believe in the Quran, who believe in the hereafter. Allah exclusively addresses them plus minus 87 times in the Quran with this expression, Ya ayyuhalladheena amanu, O people of Iman. And in these verses, what does Allah outline? What Allah has commanded you with, what Allah has prohibited you from, what lies the pleasure of Allah, what lies the displeasure of Allah Ta'ala. However, the sad irony and reality is that except a few, majority of us are oblivious. One such address in Surah Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala addresses the people of Iman. Ya ayyuhalladheena amanu ittaqullah وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Break this down. You are mine, I am yours.
You have brought Iman upon me. You are my followers. You have declared your belief on me. And I am saying to you, Ittaqullah, technically fear me, no. What does it mean? Have consideration for your Allah that created you. Don't disobey me. There is nothing worse than the anger of Allah. And how will you acquire Allah's anger? By disobeying Allah. Isa alayhi salam, this question was asked, that what is the greatest source of pleasure to Allah Ta'ala? The obedience. What is the greatest source of pleasure? When Allah becomes happy with you. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. And what is the most dreadful thing? What is the most fearsome thing? The anger of Allah. Why? When Allah is angry with you, your world will be destroyed. Your akhirat will be destroyed. And Allah becomes angry by flagrantly and persistently disobeying Allah Ta'ala. Despite Allah's love, observe a father-son relationship. Son declares openly, loves his father, yet disobeys him. Goes against him, again and again. What happens as a result of that? He will become the source of anger to his father. Persistent disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, Ittaqullah. Stay away from my disobedience. Wal tanzur nafsun. This word nafsun has tanween. In other words, it creates a general meaning. That every soul, whether white, whether black, whether rich, whether poor, whether African, European, American, whoever, wherever, every one of you be conscious. Conscious of what? The word Quran brings ma, again a general address. Conscious of the actions that you are doing for what? Allah says, lighad, for tomorrow. The word ghad technically translates tomorrow, but not the tomorrow of this world, that today is Friday and tomorrow is Saturday. No. That tomorrow Allah is telling us about, after which there will be no tomorrow. Future is the akhirat. Because after akhirat there is nothing. So what preparation have you done for during the life that remains? Allah is cautioning us, wal tanzur. Take stock. Understand how much of your life has passed. What little remains. What is of what has passed. And what I have at my disposal. How much am I preparing for my maqsad and my objective? How much real preparation for the future am I making? Hasibu qabla an tuhasabu. Take stock of yourself. Take stock of yourself before the actual reckoning comes. Because that reckoning is such that every small action will be accounted for. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. That day of reckoning, the atom's weight of deed of good you will see. The atom's weight of deeds of disobedience of Allah, you will see it. Maliki Yawmiddin. It is the day of jaza. It is the day of recompense. Every Nabi of Allah also on that day will be saying, Nafsi, Nafsi. He will be concerned for himself. Such a day is coming. My respected brothers, future, that is the future. That is tomorrow. The sad irony, reality is that our effort is such that that real future is out of the sight, out of the mind. To the infant, his future is his youth. To the youth, it is adulthood. To the adulthood, it is old age. Our Master sallallahu alayhi wa sallam cautioned us, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. The intelligent one amongst you is the one who is suppressing his desires and preparing for the future. Ba'da al-maut, after akhirat. This 50, 60 years short life. These are necessities. Your food, your drink, your shelter, your nikah, what car you are driving, what house you are living in, etc. The future, how many thousands of years in that qabr?
the first day of Akhirat, 50,000 years long. The Jannat, Jahannam, Allah protect us. If you enter into Jahannam on kufr, that will be forever and ever, never ever coming to an end. That is the real future. This concept or idea, work and make effort for the future, that is part of human nature. It is correct. But Quran defines for us what is tomorrow and what is the future. And our Master sallallahu alaihi wasallam outlined it for us, that the intelligent one amongst you is the one who will have akhirat in front. दुनिया के मुकाबले में आखिरत है, और दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी है। दुनिया बेकार नहीं है, बेमकसद नहीं है। दुनिया अल्लाह ने बामकसद बनाई है, और दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक छोटी सी हदीस है जो जवामिउल कलिम में उलमा लिखा है, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा। बहुत छोटी हदीस है। आप अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियात हैं उनमें जवामिउल कलिम भी है। बात मुख्तसर है, जुमला मुख्तसर है, अल्फाज मुख्तसर हैं, लेकिन मानी को समंदर है। हमारे यहाँ कहते हैं कि फला आदमी तो समंदर को कूजे में बंद कर देता है। बात बहुत मुख्तसर, और उसको फैलाओ फैलाओ तो समंदर की तरह है। तो इसी तरह यह हदीस है, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा। मज़रा खेती को कहते हैं। फरमाया कि पूरी दुनिया तुम्हारी हर इंसान के लिए ऐसी है जैसे किसान के लिए उसकी खेती है। जैसे किसान अपनी खेती में वक्त पर मेहनत करता है, जमीन को नर्म करता है और कीमती दाना ले जाकर उसमें डालता है, उसे पानी देता है, खाद देता है, उसके रखवाली करता है। 3 महीने 6 महीने में वो फल या वो बीज बरगोबार लाता है। अगर वो चावल का है तो चावल, अगर वो गेहूं का है तो गेहूं, और अगर कोई बेल है फूलों की तो फूल है। अनार का दरख्त है अनार, अंगूर की बेल है तो बेल, अंगूर आएंगे। जो दाना डालेगा वही उसको मिलेगा। लिहाजा मालूम है कि वक्त पर मेहनत भी करना है, सही दाना डालना है, और उसकी रखवाली और देखभाली करनी है। उसे नुकसान देने वाली चीजों से उसको बचाना भी है, पानी भी देना, खाद भी देना, वक्त पर मेहनत करना। और जो उसने डाला है वही उसके घर वो गल्ला आएगा, फूल आएंगे, फल आएंगे। लेकिन अगर उसने मेहनत नहीं की या गलत मेहनत की, वक्त पर मेहनत नहीं की, सही दाना नहीं डाला लेकिन उसको पानी और खाद नहीं दिया, उसके रखवाली नहीं की, उसे नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से हिफाजत नहीं की, तो जाहिर है कि उसको जमीन से फायदा नहीं होगा। सारे किसान सही मेहनत करने वाले गल्ला ले आएंगे, लेकिन ये बैठे रोएगा, अफसोस करेगा, काश मैंने भी कुर्क कर लिया होता। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। फरमाया इसी तरह इंसान के लिए पूरी जिंदगी ये मेहनत के लिए दी गई है। वक्त पर मेहनत करो, सही मेहनत करो, और सही रुख से मेहनत करो, और फिर जो अमाल कर रहे हो उस अमाल की निगरानी करो। उन अमाल को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीजें हैं उससे इज्तनाब करो, रिया से, सुमा से, दिखलावे से, खिलाफ सुन्नत काम करने से, सारी चीजों से परहेज करो, और फिर इंशाअल्लाह उसका समरा, उसका फल, उसका नतीजा आखिरत में मिलेगा। मेहनत का जमाना अलग होता है और फल लेने का जमाना अलग होता है। इसलिए मेहनत का जमाना आज है, उसका फल लेने का जमाना कल है। कल मिलेगा जो आपने यहां पर किया हुआ है। तो माना कि दुनिया मेहनत की जगह है, काम की जगह है, कुर्बानी की जगह है, कीमती चीजों को अल्लाह के लिए कुर्बान करने की जगह है, और फिर इंशाअल्लाह उसका फल मिलेगा आखिरत में। इसलिए कि दुनिया
دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہاں عمل کرنا ہے، جزا وہاں پانی ہے.